Okay, that's awesome. Hi to all of you guys. Yes, I want all the students to be on the chat because आज हम start करने वाले हैं Menti Quiz. I'm sure आप लोग बहुत wait कर रहे थे. I've seen plenty of you, constantly putting it on the comments. Sir, please bring the Menti Quiz on whatever you're teaching. तो ठीक है, आज से Menti Quiz हुआ करेगी, and I'm sure you guys are gonna have a lot of fun in this class. Let me just see how many of you are there in the live chat. I will be switching on my live chat. That's awesome. So yes, that's great. Over here, I can see plenty of you are there joining and excited, right? So अगर आप लोग खुश हो आज मेंटी होने वाला है, do give me a yo and a smiley on the chat. That would be really awesome to see, before starting up this quiz. Yes, that's awesome. And guys, one more thing. If you actually want Menti quiz to happen regularly, you should be. You should be subscribing the channel. You should be hitting the like button for this video. ताकि I can see how many students are really excited for Menti quizzes to happen और बस फिर Menti ही Menti होगा. ठीक है? That's awesome. Yes, I'm sure और आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही मक्खन है, बहुत ही क्रिस्प है. छोटा सा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स बट बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के सिलेबस के हिसाब से. ठीक है. सो अगर जेई को नजर में रखें हम तो ये टॉपिक जो है क्वांटम नंबर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और वो पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी से और वो होते हैं बहुत स्कोरिंग. अगर आपका स्ट्रेंथ है इस क्वांटम नंबर्स वाले टॉपिक में तो आपके बन जाते हैं फ्री के 4 नंबर. और अगर नहीं है और कुछ सिली मिस्टेक कर दी तो -1 हो जाता है कि नहीं? तो डिफरेंस कितने का आया 5 मार्क्स का आ जाता है. सो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वापस दोबारा कभी भी ना पढ़ना पड़े शायद. ठीक है. सो दैट्स ऑसम. ओवर हियर सर विल टीच इन हिंदी और इंग्लिश. सो आई एम एक्चुअली गोना ट्राई टू कीप दिस सेशन in Hindi and English both, though the questions and everything that is going to be there on the slides is going to be in English. Interact करते वक्त शायद बीच में कभी कभी हिंदी हिंदी हो जाए. ठीक है. So that's awesome, right? Okay, so यहाँ पे let's go into what are we going to talk about. Again, for those who are joining, you should not at all forget कि JEE 2022 के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्लासेस चलती हैं, राइट? 12th वालों के लिए भी चलती हैं. दिस इज फॉर ग्रेड 11. आई एम टीचिंग केमिस्ट्री फॉर दोज हु आर कमिंग फ्रॉम क्लास 10th टू क्लास 11. बहुत मुश्किल होती है केमिस्ट्री, बहुत मुश्किल लगती है एंड आई एम श्योर प्रॉब्लम आती है कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े. आई एम देयर फॉर यू. रेगुलरली क्लासेस आ रही हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर हम खत्म कर चुके हैं, राइट? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं. अगली आने वाली क्लास होने वाली है पीरियोडिक टेबल पे. यस, सो पीरियोडिक टेबल पे आने वाली है अगले वीक से. एक और क्लास बाकी है जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना है, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट? क्या क्या रूल्स होते हैं? यू शुड बी सब्सक्राइबिंग द चैनल. वीडियो is going to be live. I mean, I am going to be live, not the video, but I am going to be live over here on this channel, Vedantu JEE. So you should be subscribing the channel. Timing मैं नहीं बताने वाला, ठीक है? So that's awesome. Over here, this series is known as JEEt Lo, JEET Lo 2022. So अभी हम मिलने वाले हैं. कितने लोग मुझे मिलने वाले हैं कल की क्लास में जहां हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को फुल फाइनल खत्म कर देंगे और एक नए वीक की वेट करेंगे जहां पे हम पीरियोडिक टेबल शुरू कर सकें. Yes. So for those who are watching me for the first time, this is me, Luv Mehan. I'm a chemistry expert at Vedantu, and we will be looking into the Menti quiz today. And let's get started. Okay, give me a second. Problem हो गई है थोड़ी. Yes, inverter थोड़ी देर बाद चलेगा शायद. So let me just use a bit of the light. Right? Great. Give me a second. Yes, so that would be awesome. So over here we will be talking about the Menti quiz. और जल्दी से शुरू करने वाले हैं. You should remember अगर आपको फिजिक्स की या फिर मैथमेटिक्स की भी क्लासेस चाहिए, you should remember अरविंद सर आ रहे हैं आपके लिए मैथ्स लेके एंड फिजिक्स के लिए आ रहे हैं सूरी सर आपके लिए फिजिक्स लेके. टाइमिंग्स सेशन के थ्योरी सेशंस के रहते हैं 7 o'clock. ठीक है. एंड अगर हम बात करें एमसीक्यू क्लासेस की वो रहेंगी 8 PM. सो आई एम श्योर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये चीजें नहीं पता चल पाएंगी. सब्सक्राइब कर लोगे तो सबकी सब नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी. ठीक है. यस, दैट्स ऑसम. एंड यस, ओवर हियर प्लेलिस्ट बनी हुई है. बाकी सारी की सारी जितनी भी थ्योरी मैंने कराई है उनके रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे. प्लेलिस्ट ढूंढ लेना JEEt Lo 2022. यस, PCM के अंदर, एंड यू विल बी एबल टू गेट ऑल द केमिस्ट्री क्लासेस. ग्रेट. सो यस, ओवर हियर
क्विजेस शुरू कर रहे हैं. सब्सक्राइब द चैनल फॉर द क्विज. यू शुड बी ready for the quiz. And yes, menti.com पे जाओ. You all have to go to the menti.com. कोड दे रहा हूँ 799873. थोड़ा इसलिए बातचीत रखिए आप लोगों से ताकि जो बच्चे अभी ज्वाइन करने वाले हैं हल्का फुल्का लेट, वो भी आ जाए. हमने क्विज शुरू ना कर रखी हो. बट यस, दिस इज गोना बी द मेंटी कोड फॉर द menti.com. ये जब कोड अप्लाई कर दो, then you have to come to this particular chat and give me a you. आपने YouTube को बंद नहीं करना है. You shouldn't have to stop you know. आपको YouTube का जो टैब है वो बगल में ओपन रखना है. And you know why? Because YouTube पे आप लोगों को मैं फिर से बुलाऊंगा, आपको चैट पे लिखवाऊंगा कि आपका स्कोर क्या है. लीडर बोर्ड में सबका स्कोर नहीं आएगा, राइट? लीडर बोर्ड में सबका स्कोर नहीं आएगा. दिस इज द रीजन आई एक्चुअली वांट you to be there on the chat putting your individual scores. ठीक है? No, for those Peter, you are not at all late right now. I am sure you guys are gonna be there. मेंटी का कोड लगा दिया है. फिर से वापस आपने चैट पे आना है. चैट पे आने के बाद आपने क्लिक करना है. यस, आपको मुझे बताना है कि आपका क्या इंडिविजुअल स्कोर था. ठीक है? यस, ओवर हियर द फर्स्ट क्वेश्चन. गिव मी अ सेकंड. Yes, there it is. So we will be starting up right now, and I'm sure you guys are ready. Ready? So again, give me a yo on the chat. फिर हम शुरू कर रहे हैं फटाफट. अभी नहीं, give me a yo on the chat. फिर हम शुरू कर रहे हैं. जल्दी से आओ. I would like to see. That's awesome. यहाँ पे मुझे Yakaswamy saying sir I am. Yes, ready. RG Naveen is saying yo. तो शुरू करते हैं. So over here, yes, it's loading. Yes, waiting for the players. I would like to see maximum numbers. अभी सिर्फ 96 97 हुए हैं. I am actually looking for around somewhere around 150. So come on. 108, that's it. अरे आप लोग तो कहते थे रोज 90 चाहिए, बस इतने से हैं. 111. थोड़ा सा और वेट करें क्या? लेट्स सी. अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स मेंटी में बैठे हैं और शायद यूट्यूब बंद कर चुके होंगे, आई वांट यू टू बी देयर ऑन द चैट समहाउ. ब्रिंग योरसेल्फ. फटाफट देखते हैं. ओके. अच्छा, 119 बन चुका है, 120 हो चुका है. लेट्स स्टार्ट दिस क्विज. 120 इज अ गुड नंबर. शुरू करते हैं. एंड राइट नाउ, अच्छा और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं. प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग. ऑसम. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, over here, answer fastest to get maximum score. Which quantum numbers do 2s and 2p orbitals have in common? You still have almost 53 seconds to give me this answer. Which quantum number do 2s and 2p orbitals have in common? कौन सा ऐसा quantum number है जो 2s और 2p में common है? We will be starting up with a bit easier questions, फिर आगे बढ़ेंगे हम. राइट? एंड जितने भी स्टूडेंट्स लाइव चैट में हैं, यू हैव टू एक्चुअली लेट मी नो कि आपका इंडिविजुअल स्कोर क्या है. ठीक है? एंड आंसर आप लोगों ने सारे के सारे चैट पे देनी है. सो कम ऑन गाइस, आई एम श्योर यू गाइस आर देयर, यू कैन हियर मी. यू हैव टू गिव मी द आंसर्स ऑन द चैट. Okay, so I could see plenty of you there, and few of you are saying Naga is saying B, Invisible is saying A, Sakshi is saying B. Okay, and the correct answer, yes, it's absolutely gonna be B. Yes, over here N is the number, N is the answer which is absolutely gonna be right. 82 students have given me the right answer. That's awesome. N is nothing but known as principal quantum number, which tells you the information about shell, right? So यहाँ पे 2s और 2p की जब हम बात कर रहे हैं, we are actually talking about the shell number 2. So yes, over here we are gonna be looking into the leaderboard, and I could see over here सबके scores बन चुके हैं, and सबसे ज्यादा highest scores हैं हमारे पास आतिफ के पास, देन गायत्री, हरित, इशिता, नित्या, शिवम, मिस्टर सेड, मुस्कान, वर्ष एंड हर्षिता. लेट्स गो. अभी ये जो जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम है, एंड आई वुड लाइक टू सी लीडर बोर्ड्स टू चेंज. बाकी स्टूडेंट्स, ब्रिंग योरसेल्फ ऑन द चैट एंड डू लेट मी नो कि आपका क्या स्कोर बना. ठीक है? सो लेट्स गो. एंड ओवर अहेड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले let's move to the solution. So यहाँ पे yes, I have told you that the answer to this question was B, which is N. N is nothing but
the principal quantum number which tells you the information about the shell, right? So the next question, एक काम करते हैं, मेंटी का क्वेश्चन दिखाने से पहले क्या मैं आपको YouTube पे उसको उसका क्वेश्चन दिखाऊं, सो दैट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए कि कैसे करना है ये चीज भी ट्राई करते हैं, ठीक है? सो द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट फॉर अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल आर पॉसिबल. सो लेट्स गो. तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखना है और फिर ऑप्शंस तो आ ही जाएंगे, ठीक है? अगेन वी आर स्टार्टिंग अप. दिशु इज सेइंग 882 पॉइंट्स, ग्रेट. So for a principal quantum number n, how many atomic orbitals are present? Hi Lesari K. Rajni is Choki saying 18th position with 855 score. बहुत ही कम डिफरेंसेस हैं स्कोर के अंदर. आई एम श्योर यू गाइस कैन डू इट. अगर एक क्वेश्चन आपको समवेयर अराउंड 1000 या 900 स्कोर दे रहा है, एक क्वेश्चन आपने सबसे फास्टेस्ट किया और आप सबसे ऊपर आ सकते हो लीडर बोर्ड में, राइट? सो यस, दैट्स गुड. You almost have 28 minutes, 28 seconds. Come on. Okay. Thank God. Yes, we are having a power backup right now. Okay. 5 seconds more. 4, 3, 2, and 1. The correct answer, yes, has been given by 63 students. I don't know why n plus 1 is the right answer for plenty of you. I mean, आप लोगों को क्यों लग रहा है 38 of you are going in a wrong direction? वहाँ पे n भी लिखा है 20 number of students ने, and 2n लिखा है 22 numbers of students ने. जितने सारे 63 बच्चे स्टूडेंट्स ने मुझे सही आंसर दिया है, यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ ऑन द चैट एंड गिव मी अ यो, ठीक है? सो गिव मी अ यो एंड वी विल बी अगेन मूविंग अहेड. यहाँ पे द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज n स्क्वायर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग. अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, n is the number of shell, है ना? अगर n is equals to 1 है तो shell number 1 है, अगर n is equals to 2 है तो shell number 2 है. n is equals to 1 के केस में you should know only one s is present, है कि नहीं? अभी इसको कर लेते हैं. अगर हम n is equals to 1 के बारे में बात करें, you should remember that the shell number is 1, सिर्फ 1s present है. कितने ऑर्बिटल हुए? 1. अगर हम n is equals to 2 के बारे में बात करें तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं? वहां पे हमारे को मिलता है 2s and 2p. 2s के अंदर 1 ऑर्बिटल एंड 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल, टोटल बन जाते हैं 4. तो बस 2 का स्क्वायर किया, 2 स्क्वायर n स्क्वायर इज गोना बी योर राइट आंसर, है ना? So let's go with the next question. यहाँ पे आंसर C था. And yes, over here the next question talks about which set of quantum numbers uniquely defines one of the electrons in an atomic orbital with n is equals to 2, l is equals to 1. This is the question. छोटी सी बस ग्लिम्स दिखाई क्वेश्चन की. क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होने वाला है. Let's see. So over here leaderboard देखेंगे, and over here let's see how many of you are gonna be there. And you have to tell me the rank, guys. You have to tell me your rank and you have to tell me your individual marks on the chat. इशिता अब सबसे टॉप पे आ गई है. शिवम, मिस्टर सेड, आतिफ, हरीफ, प्रभु दत्ता and Ashutosh, Harshita, Grisman and Thinky. Great. So over here the question जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था is gonna be, come on, which set of quantum numbers uniquely defines one of the electrons in an atomic orbital with n is equals to 2, l is equals to 1? We still got almost 50 seconds. Come on. Hi Shubhav saying thank you so much. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time up. Let's see how many are there. Is equals to 0. You should always remember
ml वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस एल टू प्लस एल की रेंज में होती है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे जो कि है आपके पास सेकेंड वाला, ml is equals to 1, that can never happen, right? ml is equals to 1, yes। और वे चलते हैं समझने के लिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना था। l is equals to 0 क्वेश्चन था। सो नाउ लेट्स सी, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं होगी। कम ऑन, यस, great, awesome। 5, 4, 3, 2, and 1। How many radial nodes does a 4s orbital possess? For looking into the leaderboard, and आपने अपनी individual rank, अगर आप leaderboard में नहीं हो, you have to post it on the chat। So यहाँ पे आशुतोष, प्रभु, शिवम, मिस्टर सेड, हर्षिता, थिंकी, अनु, ग्रिजमन एंड संयुक्ता आगे। एंड देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर सही क्या था, which was nothing but 3। फॉर्मूला क्या है, we should remember यहाँ पे n वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n value is gonna be nothing but 4 for your s orbital, your or s subshell। The l value, azimuthal quantum number value is gonna be 0। फॉर्मूला यूज करना है n minus l minus 1, n minus l, azimuthal quantum number minus 1। So that is going to be nothing but 4 minus 0 minus 1, which gives you the answer 3, right? So let's move ahead and दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। In which of the following does the central atom not achieve an octet of electrons? So let's see. So over here, there you go. In which of the following does the central atom not achieve an octet of electrons? Come on. Come on, guys. Yes. So the Menti code, for those who are asking, it's 798973. It's written at the top 798973. Okay. Use this Menti code. जल्दी से आप लोगों ने मुझे बताना है, in which of the following does the central atom not achieve an octet of electrons? Time is up. Let's see how many of you are giving me the correct answer. And yes, the correct answer to this question is BH3। That's awesome, because boron के पास कितने outermost electron होते हैं? Boron के पास होते हैं outermost electron which is 3। हाइड्रोजन के साथ अगर कोवलेंट बॉन्ड बन भी गया तो उसको 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल become 6 and not 8। Yes, that is the right answer। And over here we will be looking into the leaderboard and you have to tell me the correct answer on the chat। So come on again। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मिस्टर सेट couldn't give me the right answer, I feel या बहुत शायद लेट दिया है। मिस्टर सेट का रैंकिंग थोड़ा नीचे हो गया है। प्रभु दत्ता इज एट द टॉप, देन आशुतोष सेकंड पे आ गया है, हर्षिता, थिंकी, अनु, गिल्समन, संयुक्ता, मिस्टर सेड, आकांक्षा एंड एसकेआर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई विल नॉट बी चेंजिंग द स्लाइड बिकॉज़ मेंटी थोड़ा क्रैश हो रहा है आई गेस। यस, सो यहाँ पे लेट्स मूव टू द मेंटी क्वेश्चन। एंड यस, द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट which of the following pairing is incorrect? Which of the following pairing is incorrect? Come on. You almost have 30 more seconds. 23, 22, 21 and 20. 16, 15. Let's see how many of you can give me the correct answer. In which of the following pairing is incorrect?
2, and 1. The correct answer to this question, yes, it's absolutely 3, which is C. 68 of you have given me the correct answer. 1s orbital, 1 radial node is the wrong statement, but a correct answer. So, 1s orbital के बारे में बात करें, 1 radial node के बारे में बात हो रही है, we have to look for the incorrect one, right? So incorrect तो है ही, क्योंकि 1s के केस में n value, principal quantum number value is going to be 1, azimuthal quantum number is going to be 0, yes, 0 minus 1, n minus l minus 1 is going to give you 0. Radial nodes with 1s is going to be 0, not 1. Okay, this is the reason it is an incorrect pairing, but the correct answer, right? Let's move and look into the leaderboard. How many of you have given the correct answer? Wow, awesome. So over here I could see Thinky, we have Prabhu, Thinky, Harshita, Gizman, Sanyukta, SKR, दम है तो हनीश को हरा के दी. Okay, Hari Bol, Akansha and Mr. Sid. ठीक है. So let's move ahead and let's look into the next question. The next question talks about what is the azimuthal quantum number for the following subshell. इस ऑर्बिटल का azimuthal quantum number क्या होने वाला है? You have to tell me as quickly as possible. तभी leaderboard में फटाफट आओगे. Come on. The correct answer to this question in almost 23 seconds. I could see 122 students have given me the answer till now. In almost 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Chalo, time up. Let's see how many of you have given the answer. 69 again. 2 is the correct answer, guys. We are talking about what is the azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number क्या होता है? L. And L value for S subshell or orbital is 0, for P it's 1, and for D it's 2. यहाँ पे जो हमने shape देखी थी that was double dumbbell, and double dumbbell shape is for D orbitals, right? And यहाँ पे subshell का, इस subshell का जो azimuthal quantum number है that is gonna be 2. Yes. F का क्या होता है? What is the azimuthal quantum number for S? F not S. S का तो बहुत easy है. F का बताना है in the chat. ठीक है? चलो. So over here, Harshita has taken up the lead. Prabhu second पे आ गया है. Then we have Samyukta on the third. Samyukta ने भी बहुत अच्छी jump मारी है. Akansha, Haribol, Mr. said, दम है तो Ishta and Ashutosh and Sakit. Right. Now let's move to the next question. And the next question talks about the following is the wave function for which orbital. The following is the wave function for which orbital. जल्दी से. You still have 40 seconds, guys. Twelve, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time's up. Let's see how many of you are there. Okay, 47 students are correct over here. It's not for 1s. Plenty of you are confused with 1s or 2p. You should remember, whenever we're going to talk about such kind of, you know, graph, you would be looking at the graph was touching the x-axis just once.
the graph was touching your x-axis just one, it actually tells you the number of nodes. And over here in the case of 2s, you should remember in the case of 2s, the radial node is just 1, right? 1s के केस में 0 होते हैं, 2p के केस में भी आपके पास जो radial node है वो 0 होने वाली है, right? So you should remember 2s is the correct option. 3s के बारे में बात करेंगे तो 2 radial nodes आने वाली है, right? So yes, the leaderboard is there. Let's see how many of you are gonna be there. So we have again, प्रभु ने इस बार शायद आंसर नहीं दे पाया, मिस्टर सदन में कांशा बहुत पीछे जाने वाले हो. यस, पूरी की पूरी लीडर बोर्ड चेंज हो गई है. हर्षिता, संयुक्ता एंड दम है तो आर द टॉप 3. हरिबोल, इशिता, प्रभु, आकांक्षा, मिस्टर सैद, निशांत, यशस्वी. लेट्स सी क्या बाकी के लोग ऊपर आ पाएंगे. सो ओवर हियर पहले तो फटाफट बता दूं, whenever we gonna talk about such kind of question, ये वाला भी हमने कर लिया. यस, ओवर हियर यू कुड सी the graph was actually touching the wave function जो है on your y axis, और जो आपका r के साथ जो ग्राफ बना है it is actually touching the x axis just once, right? तो इसका मतलब एक ही नोड अवेलेबल है और ज्यादा नहीं. अगर दो बारी अगर ये अटैच होता तो शायद 3s आपका सही आंसर होता. ठीक है. So yes, let's move to the next question. The probability of finding an electron is uniform in every direction in which of the orbitals? So yes, this is the question. Let's see how many of you can again read the question and give me the correct answer as soon as possible. The probability of finding an electron is uniform in every direction is in which orbital? S, P, D or F? You still have almost 53 seconds now. Let's see if you can take the score, get the highest score, because this is one of the easiest questions. Come on, you have to tell me the answer on the YouTube chat as well, because Menti पे मैं आपके answers देख सकता हूँ, पर किस student ने क्या answer दिया है I would like to know. क्या लगता है आपको क्या answer होने वाला है? You can show off your knowledge over here. So yes, bring yourself on the live chat so that if you want to tell others that yes, you knew the right answer, you have to tell me the individual score of yours and the rank on the chat. So let's see. Thank you so much, Shyam. So over here I could see 97 students have given me the right answer, which is S. That's true. Whenever we're going to talk about the shape of S orbital, it is spherical. It is spherical और sphere हर angle से, हर direction से, हर angle से same होता है, right? अगर हम P या D या F के बारे में बात करें, P के केस में डम्बल है, D के केस में डबल डम्बल है. Those orbitals are not same in every direction, from every direction, right? So over here, let's see the leaderboard. How many of you are there? And I am really excited to see यहाँ पे कौन टॉप करने वाला है. I feel Harshita is still gonna be at the top. Let's see. Yes. So Harshita वही है, सारा पूरा का पूरा leaderboard वही है. Rank change हुआ है. You have to tell me your rank on the chat, guys. Come on, फटाफट आओ and मुझे chat में बताओ. The next question over here talks about, अभी questions बचे भैया. Which of the following can be the quantum numbers for an orbital? So which of the following can be the quantum numbers for an orbital? Come on. Seventeen, 16, 15 seconds more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yes, I could see plenty of you in the chat are giving me the correct answer C. Yes, देखते हैं कि C correct answer है कि नहीं. Yes, over here C is the correct answer. 91 students have given me the answer. Now n is equals to 3, L is equals to 2, M is equals to -1 is actually possible. अब मैं बताता हूँ फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों है. n is equals to 4 and L is equals to 4. L वैल्यू कभी n वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती. ठीक है.
अगले केस में L वैल्यू तो L n वैल्यू से, एजिमुथल क्वांटम नंबर 3 है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, L बड़ा नहीं हो सकता n की वैल्यू से। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लास्ट वन, अगर आपके पास L वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 दे रखी है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पॉसिबल सिर्फ 0 ही है, -1 -3 -2 ऐसा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए तीनों ऑप्शंस गलत थे, ओनली एंड ओनली सी ऑप्शन इज राइट एंड यस यू हैव टू टेल मी द रैंक इन द चैट। यहाँ पे लीडर बोर्ड देखते हैं कैसे चेंज होने वाला है। आई फील थोड़ा सा अदली बदली होने वाली है। यस, आशुतोष इज एट the second last. Harshita is the one which has given me almost every answer which is correct and the fastest. 9,483 points is there. This is going to be the screenshot. Yes, that's good. And congratulations to all of you out there who are there in the chat, or in the quiz. And we will be meeting again, but you don't have to go anywhere because you should be joining us on the Telegram. Yes, अभी के सारे बच्चे आ जाओ सारे YouTube के chat पे. I want to see all of you in the chat. मुझे जानना है कि अगर आप लोगों को मजा आया, कितना आया, क्या हमने और मेंटी क्विज करनी है. How many of you want मेंटी क्विज, more and more मेंटी क्विज again? So give me a yo on the chat. And yes, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन जाननी है कि हम क्या क्या करने वाले हैं चैनल पे, yes, JEE से रिलेटेड न्यूज, वेदांतु JEE से रिलेटेड न्यूज, you should be joining this link vdnt.in/vedantu and this is going to be there in the description as well, so आसानी से मिल जाएगा. And yes, for those who are really serious about cracking JEE 2022, we have started 2 years long-term program which is actually paid classes, but you don't have to pay anything because in this COVID outbreak, we are actually giving education everywhere, for free to everyone. So over there you're gonna have 4,000 plus of hours of live online learning, 40 plus teachers of great experience, and from top IITs are also present over there to teach you the best. 750 tests and 3,000 assignments, rank booster quizzes like this with the leaderboard is going to be there in our classes. Instant doubt solving, replays of the classes are also going to be there. So you should be there. And yes, plenty of you are giving me a yo-yo on the chat. That's awesome. Again, congratulations to Harshita. And we are again gonna meet, but don't worry. अभी आपको अगर और मिलना है और पढ़ाई करनी है, बहुत ही awesome. इस 2022 के प्रोग्राम में मैं खुद क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, एंड हर सर भी क्लासेस ले रहे हैं. You should remember you have to go to the link vdnt.in/YTJEE22 enroll for free. कुछ नहीं करना है. और अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी, do hit the like button. अटेंडेंस जरूर लगा के जानी है. शेयर दिस वीडियो विद योर लल्लू फ्रेंड्स ताकि आप उनको जता सको कि आप उनके लिए कितनी केयर करते हो. यस, एंड यस यू शुड बी सब्सक्राइबिंग द चैनल बिकॉज इंफॉर्मेशन और अपडेट्स तो सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेंगे. डू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारी, एंड वी आर गोना मीट अगेन रियली सून. टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा. यस, आकांक्षा इज सेइंग द 7th rank, दैट्स ऑसम. चलो, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ. Stay tuned for another Menti और कल होने वाली है theory class. Do not miss. We are going to learn all about electronic configurations. Bye bye.